Good evening, all of you people. Good evening, all of you people. I welcome you to zbit.com's live stream, which is active now on both platforms, zbit.com, the app, and on YouTube live streaming as well, right? I'm here today to discuss a very valid and a very important topic, and that is when will Bitcoin's bull run finally arrive, right? That is the topic that we are going to look at today, and it is the need of the hour. It is very important to discuss this topic because of what all is happening in the world of cryptocurrency. You've seen how the market is reacting. You've seen Bitcoin fall to somewhere even less than 60,000. And you've seen that it has risen as well. Yesterday, it went till $72,000 as well, right? I'll just look at the 1 day period. The highest was 71,710 in the last 1 day, right? Right now it is currently at 68 something, but you know that Bitcoin is right now very, the market is in a very bearish state of mind, and we are looking at a market wherein sellers are dominating. ठीक है, मार्केट ऐसी हो रही है जहां पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं ज्यादातर। जो है आपको लाल वाले जितने भी कैंडल्स हैं वो दिख रहे हैं, वो नीचे आते हुए इशारा कर रहे हैं कि मार्केट अभी एक बेरिश स्टेज से होके गुजर रही है। कहाँ जाके बिटकॉइन का फॉल रुकेगा? काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस हैं जो हमने लास्ट कुछ दिनों में देखी भी हैं। लोगों ने वाइल्ड वाइल्ड प्रिडिक्शंस करी है। किसी को लग रहा है कि बिटकॉइन जो है यू नो लोगों को लग रहा है बिटकॉइन जो है 55,000 तक भी जाएगा, किसी को लग रहा है 38,000 38,000 तक जाएगा। सो there have been predictions pouring in from all directions. Some people are still very bullish about it, and others are very bearish about it. तो कुछ अभी मार्केट के बारे में क्या ये चार्ट्स कह रहे हैं, क्या जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, और क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बिटकॉइन के ट्रेमेंडस फॉल के पीछे, ये तो हमने लास्ट कुछ लाइव सेशंस में देखा ही है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इवेंचुअली फिर क्या प्रेडिक्शंस चल रही हैं रिगार्डिंग बिटकॉइंस अपहीवल और बिटकॉइंस फर्दर राइज इन द मार्केट। $1 लाख तक जाने की संभावना पूरी पूरी बन रही थी थोड़े दिन पहले तक, बट people were very bullish at that time as well. Now with the Iran-US war looming large, and with you know leverage being removed from the market and Bitcoin falling to its real price, it remains to be seen where we will head towards, right? उसी के बेसिस पे हम आज ट्रेड भी करेंगे और इस बुल रन का इंतज़ार तो हमें रहेगा ही रहेगा। So, on that note, I welcome all of you to the live stream, and I hope that you will be, staying tuned throughout this live session, wherein I will be guiding you as to where Bitcoin looks like it is heading, and where will the eventual bull run start. Will it fall further? Will it stop? What will be the process? What will be the guiding force? We will look at all those reasons today. I welcome all of you to the live stream, people who are joining on YouTube as well as on the zbit.com app. अगर आपने zbit.com ऐप को इंस्टॉल नहीं करा है तो आप कर लीजिए। अगर आपने अभी अभी इंस्टॉल किया है और आप एक नए डिपॉजिटर हैं, तो मेरे पास एक डिपॉजिट ऑफर भी है बाय द वे। तो डिपॉजिट करने से पहले, पहला डिपॉजिट करने से पहले सुन लेना एक बार, ठीक है? डिपॉजिट ऑफर क्या है? मैं आपको अपनी तरफ से 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आपने कुछ नहीं करना है, बस डिपॉजिट करना है। वो भी ज्यादा अमाउंट नहीं है, खाली $3 मिनिमम अमाउंट हमने सेट करा हुआ है। काफी कम अमाउंट है मेरे हिसाब से, कोई ज्यादा अमाउंट भी नहीं है। डिपॉजिट करिए $3 या उससे ज्यादा, 3 करो या 300 करो, आपको हमारी तरफ से 20,000 शिबा इनू एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, या तो फिर 20,000 पेपे। नए डिपॉजिटर्स के लिए है ये ऑफर।
डिपॉजिट तो आप वैसे भी करोगे, नीचे दिए हुए डिपॉजिट ऑप्शन पे टैप करिए और अपनी क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत zbit.com पे एक अच्छे नोट पे करिए, एक बोनस के साथ, एक पॉजिटिव नोट पे करिए, राइट? यही हम चाहते हैं, ये आप जरूर करिए। I'll begin with the live session in the next few minutes. I'll wait for a few more people to join in before I can start this session. I welcome you, user 926000 to the live stream all the way from India. बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपने डिपॉजिट कर लिया होगा, नहीं करा है तो नीचे ही डिपॉजिट ऑप्शन है मेरे इसी स्क्रीन पे, इसी विंडो पे डिपॉजिट करिए और ट्रेड करना स्टार्ट करो। मार्केट बेरिश रन पे है, डिपॉजिट पे टैप करिए और अपनी क्रिप्टो जर्नी zbit.com पे अच्छे नोट पे शुरू करिए। ठीक है, रहूंगा 3-4 घंटे, अच्छे से आपको ज्ञान देके जाऊंगा। भाई आया है, बता के जाएगा, सब कुछ बता के जाएगा। मार्केट कब बुल रन की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशंस हैं ये भी बताऊंगा, और क्या क्या प्रिडिक्शंस हैं, बिटकॉइन कितना नीचे तक जाएगा, क्योंकि मैंने एक वाइल्ड प्रिडिक्शन देखी है जो कि सुनने में वाइल्ड है लेकिन एक बड़ी कंपनी ने करी हुई है, 136 साल पुरानी कंपनी फर्म ने करी हुई है कि बिटकॉइन जो है $38,000 तक ड्रॉप करेगा, $38,000 तक। और काफी सारे प्रिडिक्शन जैसे भी है जो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम बॉटम से बहुत दूर हैं, है ना, अभी बहुत और नीचे जाना बाकी है, उसके बाद बुल रन आएगा। तो ये सारी चीजें आज देखूंगा लाइव स्ट्रीम में, आपके सारे क्वेश्चंस को भी आंसर करूंगा, कोई डाउट है तो पूछ लेना। और हाँ, अगर डिपॉजिट नहीं करा है तो डिपॉजिट कर लो भाई, नीचे दिए हुए ऑप्शन से डिपॉजिट कर सकते हो। $3 अगर पहली बार डिपॉजिट कर रहे हो तो मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू लेना मत भूलना, मत भूलना, फिर से बता रहा हूँ मत भूलना। यूजर आईडी बता देना डिपॉजिट करके, यूआईडी, मैं आपका डिपॉजिट के साथ आई विल मेक श्योर दैट यू गेट योर 20,000 शिबा इनू और 20,000 पेपे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, ये ऑफर मिस आउट कर जाते हैं, मत करो, रिमाइंड करा रहा हूँ। एनीवे, थोड़ा सा वेट करेंगे और लोग ज्वाइन इन कर लें, उसके बाद अपने लाइव सेशन को शुरू करेंगे। मीनवाइल आप लोगों का ट्रेड कैसा चल रहा है मुझे थोड़ा बताओ। मुझे ये बताओ कि आपने कोई ट्रेड लगाया है अभी हाल ही में या नहीं। अच्छा, मैं भी आज काफ़ी ट्रेड लगाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पे बैलेंस में अभी ज़ीरो दिखा रहा है, लेकिन मैं अपने स्पॉट ट्रेडिंग अकाउंट से फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अभी पैसे डाले नहीं है, अभी डाल देता हूँ, 1 सेकेंड लगेगा। लो भाई, डल गए, डले नहीं डले, रिफ्रेश कर दूं एक बार। लो भाई, डल गए मेरे, 1,000 डाले हैं अभी और डालूंगा बाद में। हाँ भाई, ट्रेड भी करेंगे, आपके सामने ही प्रॉफिट भी कमाऊंगा, देख के जाना भाई। प्रिडिक्शन करूंगा फ्यूचर की, देख लेना कितना सच होता है कितना गलत होता है, दोनों हो सकता है। इस वक्त मार्केट में प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, इस वक्त वोलेटाइल चल रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेशेंस के साथ करेंगे। आपके सामने अभी एक लाइव में आपके सामने ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ अपना, 2 मिनट रुको, आई वॉन्ट अ फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन इन, उसके बाद मैं करूँगा। हेलो हेलो सर, 464222, हेलो सर, क्या हाल है? चलो भाई, पहले यूजर से बात हुई, अच्छा लगता है आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो तो, वरना तो हम तो ऐसे बोलते ही रह जाएंगे ना, अजीब लगता है थोड़ा। तो कैसा चल रहा है मार्केट में, क्या हाल है, ट्रेड करें नहीं करें, कुछ बताओ। कहाँ तक लग रहा है बिटकॉइन जाएगा और नीचे कितना जाएगा, क्या लग रहा है आपको, बताओ बताओ। यूजर 464222, आपसे ही पूछ रहा हूँ भाई, बताओ। बिटकॉइन कितना नीचे जाता दिख रहा है? अच्छा भाई साहब, बीच में ये भी देखेंगे कि हमारे द वेरी लेजेंडरी डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, क्या क्रिप्टो बिल को लेके मूवमेंट हुई,
क्लैरिटी ऐप को लेके क्या कोई रिफॉर्म आया, कुछ बातें आगे बढ़ी, क्योंकि रुका हुआ है वो कॉइनबेस ने जब से अपना सपोर्ट विड्रॉ करा है वो रुका पड़ा है, तो इसलिए हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट हम नज़र बनाए रखें क्या चल रहा है उसमें, कितनी मूवमेंट हो रही है, कोई डेवलपमेंट है फर्दर या नहीं। तो इस पे भी नज़र देखेंगे। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें एस्केलेट कर रही हैं, क्या वॉर का खतरा जितना पहले मंडरा रहा था उससे ज़्यादा है, क्या यूएस ने कोई और कदम उठाया, एक्शन लिया, हाउ विल दैट अफेक्ट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, वी विल लुक एट दैट एज वेल। आर वी नियर अ वॉर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और आप बने रहिए मेरे साथ। आपको क्या लगता है यूज़र 464222, हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन गो अहेड एंड आस्क। और पर मेरा आपसे पहले एक सवाल है, आपको क्या लग रहा है बिटकॉइन का ये जो क्रैश हुआ है अभी हाल ही में थोड़ा बहुत, ये कहाँ पे जाके रुकेगा, या आपको लगता है कि हो गया, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्या लगता है आपको? आज के अगर मैं 60 मिनट में, हाँ ये ठीक है, 243, ठीक है, वो है 60। यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, मुझे लगा है 69 550 पे कर लेते हैं, 550 पे करते हैं, 30x लीवरेज पे आ जाते हैं, थोड़ा कम करते हैं, ज़्यादा हीरो नहीं बनते। 69,555 700 तक चला गया तो और जाएंगे हम भी, पर मुझे लगता है अब एक डिप आने वाला है। 800 तक भी जा रहा है भाई, तो रुको देखें जरा। 8 किलो 900 कर देते हैं यार। बट आई स्टिल गो शॉर्ट। तो गया ही नहीं है मतलब। 50 कर दो। 69,850 मेरा एंट्री प्राइस है, उस पे मैंने एंटर करा है। अब जैसे ये उस पे पहुंचेगा ये ऑर्डर ओपन हो जाएगा, मतलब ओपन पोजीशन है अभी। अभी ओपन ही होगा ये पता है मुझे तो। एक बार ये 69,800 तक जाए तो हमारा ऑर्डर ओपन होगा।
भाई ये तो हमारा तो प्राइस तक ही नहीं पहुंचा, ये ऑलरेडी गिरने लग गया है। कुछ नहीं होता, खैर। एक बार ETH को भी देख लेता हूँ, एक ट्रेड लगा देता हूँ, फिर उसके बाद देखूंगा। ETH भी नीचे आ रहा है, इस पे भी मैं अराउंड 60 मिनट में, 4 घंटे में हाईएस्ट ही गया है 2074 तक, लोवेस्ट ही गया 2015 तक। अब हम आते हैं 20 61 पे। 20 8 पे लगाते हैं, और लेवल हम 2000। हाँ ये तो भैया 69 होता है तो काफी गिर गया वहीं से ही, ऊपर आया ही नहीं है मार्केट में तो भाई, ये तो ऑर्डर ऊपर ही नहीं हुआ। चलो खैर, वेट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। So by going standards and the current standards, it does look like
Bitcoin's bull run is expected to come somewhere around the late 2026, right? uh, we will look at all the latest news as well. uh, अक्सर जो पैटर्न्स देखे गए हैं इन द पास्ट हिस्टोरिकली चीज़ें कैसी रही हैं व्हेन इट कम्स टू बुल रन्स व्हेन हैव बुल रन्स अराइव्ड आफ्टर ऑल दीज bitcoins halving, or all these things that bring the market down when the market goes through a bearish state. What is the point from where the bull run is about to come, or from where you can see that now the market is looking like it is heading towards a bull run, right? uh, from what I am able to understand after having read a few articles, and after having read all these news pieces, I feel like when the bull run actually starts, the news will still be bearish. Macro will still look slightly bad. Influencers will still be saying sidelines until breakout, and charts won't show ये जितने भी चार्ट्स आप देख रहे हो, दे वोंट शो दैट अभी मार्केट बुलिश रन में चला गया है ना? या एकदम से ही ऐसा एक रन फिर आपको दिखाई देगा जहां पे एक फास्ट क्लाइंब आएगा, थोड़ा सा क्लाइंब आएगा, फिर फास्ट क्लाइंब आएगा, और एक आपको एक पैराबोलिक मूव मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा जो एक मूव होता है, ऐसे ही पैटर्न रहा है बुलिश रन्स में आने का। तो लेट्स सी व्हेन दैट कम्स, बट आई स्टिल फील दैट वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट पॉइंट. When that comes, we will be here, and hopefully we can again discuss its bullish run as well, like we are discussing the bearish run. चला था भाई 69,950 तक का।
अभी भी नहीं ओपन हुआ हमारा ऑर्डर तो यार। और चलो आज तक करते थे इसे हम वेट करके कैंसिल। ये 20 घंटे पहले की न्यूज़ है। मैं कहने के लिए तो ये थोड़ा पुराना साउंड कर सकती है, लेकिन स्टिल Bitwise says peak anxiety signals crypto market is nearing a bottom. Bitwise noted that current market sentiment echoes that seen during the 84% and 77% drawdown of previous cycles, which ultimately proved to be incredible buying opportunity despite price decline. Noted that investors who bought the dip during the 2018 Nadir saw returns of approximately 2000%, while those who entered during the 2022 lows are about roughly 300% in just over 3 years. For those with long-term horizon, in this kind of track a repeat of these specific cycles. भाई हमारा तो ऑर्डर ही नहीं प्लेस हो पा रहा है यार। वेलकम यूजर 259683। स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे। इसको भी कैंसिल करता ही दिख रहा हूँ मैं तो यार। ठीक है वापस करते हैं। 69 600 20%। क्या हाल है यूजर 259683? आपका क्या कहना है मार्केट के बारे में? क्या लगता है बिटकॉइन कहाँ तक क्रैश करेगा, कहाँ ये रुकेगा? What is your take on the market? I would love to know that. Today's topic is basically when will crypto's bull run or Bitcoin's bull run finally arrive, right? That is what we are looking at. But we are also going to keep monitoring the price of BTC over the next couple of hours and see how much price fluctuations are there in the market, whether we can trade accordingly and make our predictions or not. I've also made predictions and related to Ethereum as well, but I don't think that trade has opened up as well. Oh, it has. I am in a $31 profit as well, $32। एंट्री प्राइस मेरी 2061 थी, अभी 2000 गिर रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा।
30x लीवरेज है। कितना और इथीरियम गिरेगा, क्योंकि इथीरियम कल 1900 के आसपास कहीं था। हेलो, वेलकम यूजर 121040, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम पे। तो हम इतने देर में ध्यान दे रहे थे कि हाँ, इथीरियम मैं क्या कह रहा था यार, इथीरियम 1900 के आसपास था, आज वापस 2000 के ऊपर चला गया है। और अगर आप इसका वन डे हाई देखें तो 2100 तक भी जा चुका है, और लोएस्ट जो है वो 1970 तक भी जा चुका है। पर अब यहाँ से कहाँ जाएगा वो हम लगातार देखते रहेंगे अगले 4 घंटे तक। और बीटीसी का भी मैंने अभी एक ट्रेड लगाया, बट वो भी खुला नहीं है, ये ऑर्डर भी 69,600 पे मैंने एंटर करा है, बट अभी तक वो रियलाइज नहीं हुआ। सो आई जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, once this order gets fulfilled, this position is open, and then we'll make more trades. अब देखो स्लाइड मार्केट में, बस एक बार पोजीशन ओपन हो जाए तो यार, व्हाट वुड यू सजेस्ट इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग? भाई वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट आप देखो भाई, पहले दो चीज़ें हैं। zbit.com पे आए तो यहाँ पर आप स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, है ना। स्पॉट ट्रेडिंग पे क्या है कि आपने एक प्राइस लगाया, आप उसमें आपका पैसा आप एक एसेट पे लगा सकते हैं। अभी मार्केट थोड़ी बेरिश रन से होके गुजर रही है, तो आप आपको अगर लगता है कि ये डिप है, इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा, और तो यू कैन बाय एनी एसेट एट दैट पॉइंट अभी, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी लो हैं। और देखो भाई, इवेंचुअली ये जो क्रिप्टो है ना, इट इज़ लाइक द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं ना। ये जो मार्केट का बेरिश रन चल रहा है इस वक्त, इसको अगर आप सर्वाइव कर जाओ तो मार्केट डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा एट सम पॉइंट इन टाइम। यू विल ऑब्वियसली हैव टू बी वेरी पेशेंट, पर करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये तो हो गई स्पॉट ट्रेडिंग की बात। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या आपको फ़ायदा है? आई एम आंसरिंग यूज़र 803 896 क्वेश्चन। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको क्या फ़ायदा है कि आप अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो भी आपका प्रॉफिट होता है, हो सकता है। अगर आपने बोला है कि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट नीचे जाता है, तो आपको जितने प्राइस पे आपने एंटर करा है, आप वहां से लेके मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। उसमें भी आप लेवरेज भी सेट कर सकते हो, कि मैंने जैसे अभी इस एक ट्रेड लगाया है ना, ये देखो आप, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा हल्का सा। ये देखो, जैसे मैंने इथीरियम पे मैंने एंटर करा है 2061 पे, ठीक है, ये 2061 पे मैंने एंटर करा है, और नीचे जाएगा अभी थोड़ा, ज़रूर जाएगा भाई। 2061 पे मैंने एंटर करा है। अब मैंने बोला था कि मार्केट मैं शॉर्ट गया था, ठीक है, मैंने कहा था मार्केट नीचे जाएगा, है ना, मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, तो नीचे गया मार्केट। अब मैं नीचे गया, अब मेरा देखो $35 का प्रॉफिट सीधा सीधा, $36 का प्रॉफिट सीधा सीधा हो रहा है। ये देखो यहाँ ही दिख रहा है आपको, इसमें मतलब मेरा इथीरियम का भी है और बीटीसी का भी है। टोटल ये देखो मेरा पीएनएल दिख रहा है यहाँ पर। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप फटाफट पैसा बना सकते हो। लेवरेज आपको जितना सेट करना है वो भी कर सकते हो, जैसे मैंने 30x करा है, लोग तो 40K 50K 60K सब करते हैं, है ना। तो आप भी कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है, अगर आपको फटाफट पैसा बनाना है, आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट नीचे जाने वाली है या आसार सारे बने हुए हैं, तो आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी चाहिए रादर देन स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग भी सही है, बट पेशेंस आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपको अ, लगातार ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एसेट्स कैसे कर रहे हैं। और एक बार आपने एक प्राइस पे अगर आप घुस गए,
आप फिर वहीं रहोगे। हाँ, आप दोबारा भी एक एसेट को आप कब, अब सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ इसमें क्या है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ने मेरे से एक सवाल पूछा था और बहुत जेन्युइन सवाल था। सवाल क्या था मैं बताता हूँ। सवाल ये था कि बिटकॉइन ना उस दिन 76,200 पे था। 200 300 ऐसे चल रहा था। उसने बोला कि भाई शुड वी बाय द डिप, है ना। तो मैंने कहा कि भाई इस वक्त ना कोई भी ये प्रेडिक्ट करना कि डिप क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अ, और मैंने एक दिन उसे बोला, अगले दिन मैं देख रहा हूँ 76,200 से बिटकॉइन सीधा 64,000 65,000 पे आ गया। तब तो चलो फिर भी बढ़ गया, 69 पे आ गया। तो भाई यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त ये प्रिडिक्ट करना कि क्या डिप है। आज आप स्पॉट ट्रेडिंग में जाओ, आपने खरीद लिया कोई एसेट, अगर 69,000 बीटीसी पे खरीद लिया फॉर एग्जांपल। अब मार्केट के जो प्रिडिक्शन है ना, मैं दिखाऊंगा ना भाई साहब, ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन है, $38,000 तक जाएगा बीटीसी, ये भी प्रिडिक्शन है ना। और ये प्रिडिक्शन ज़्यादातर लोग मान भी रहे हैं, है ना, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई, जब मार्केट बेरिश होता है ना, जब गिरता दिखता है तो ऐसा लगता है कि कितना भी गिर सकता है भाई, अब तो इतने तक चला जाएगा, उतने तक चला जाएगा। वरना जब मार्केट जब बढ़ रहा था ना अभी थोड़े दिन पहले, तो सर 90,000 के आसपास था बीटीसी, है ना। फिर 97,800 तक भी गया था। अब 97,800 पे लोगों के दिमाग में क्या बात आएगी, यही आएगी ना कि भाई अब तो $1,00,000 टच करेगा। वही कॉन्वर्सेशन उसी तरह से चल रही थी, वीडियोस वही दिख रहे थे वायरल, जितनी भी बातें हो रही थी, जो नैरेटिव बनाया जा रहा था ना कि भाई, माहौल जो बनाया जा रहा था वो बिल्कुल बुलिश था। भाई बातें ऐसी हो रही थी कि बिटकॉइन तो मतलब ऐसे 1,80,000 चला जाएगा मार्च में, अप्रैल में, है ना, अगस्त में। और अब आप देखो, अब बिल्कुल ही मार्केट का बिल्कुल सिनेरियो ही बदल गया है। अब आप यहाँ पर देखो 69,000 पे है, अभी कल 65 पे था, फिर बढ़ा भी था रात को 72,000 तक गया था। कोई कह रहा है 55,000 पे आ जाएगा, कोई कह रहा है 50,000 तक आ जाएगा। यही तो है भाई मार्केट, यही तो आपको दिखाती है अपने। व्हाट अबाउट थिंग शीबू, शीबू शीबू नहीं, शिबा इनू कह रहे हो क्या आप। शिबा इनू का ये है भाई, अगर आप नए डिपॉजिटर हो, अगर आपने डिपॉजिट नहीं करा है तो मेरे नीचे ही बिल्कुल डिपॉजिट का ऑप्शन है, अगर आप देख पाओ, है ना। इसी विंडो पे डिपॉजिट का ऑप्शन है। गो अहेड एंड मेक अ डिपॉजिट। अगर आपने कभी भी डिपॉजिट नहीं करा है, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर ऑन zbit.com, देन विद योर फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ मिनिमम $3, है ना, तीन डाल लो, तीन के ऊपर ही डालना। $3, $4, $400, 500 जितना डालना है आपको, $50 जो भी डालना है डालो। आपको मेरी तरफ से मिलेंगे 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू, बिल्कुल फ्री। जो भी आपका डिपॉजिट होगा उसके साथ साथ आप अपनी यूआईडी मेरे को बताएंगे, या यूजर आईडी जो होता है, और मैं आपके जीबिट अकाउंट में 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू अलॉन्ग विद जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं यूएसडीटी, वो तो दिखेगा ही आपको, साथ में ये भी दिखेगा। ये ऑफर इसलिए बताता हूँ कि भाई यूज कर लो, एनीवे आप लोग डिपॉजिट करोगे ही करोगे, है ना। यूजर, हाँ 803 नीचे ही, हाउ डू आई प्रोसीड, नीचे ही जस्ट बिलो मी इज अ डिपॉजिट ऑप्शन। Tap on it, make a deposit of $3 or more. Let me know your UID. I'll share it with my support team. They'll transfer 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe absolutely free of cost. And this is only for first time depositors. This is not for people who have not deposited so far. Okay? Who have deposited so far, I'm sorry. So the deposit option is right below me. Only use that deposit option which is below me. Otherwise, I will not be able to give you these 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe. If you randomly click on the deposit option and at anywhere in the app, I won't be able to, track your, deposit. Tap on the deposit option right below me on this window itself. नीचे ही दिख रहा होगा डिपॉजिट का ऑप्शन है। टैप ऑन इट एंड मेक अ डिपॉजिट। $3 कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। सॉरी आई मिस्ड, हाउ डू आई प्रोसीड। Yeah, so the deposit option is right below me. Go ahead and make a deposit. Minimum deposit amount is $3. You can make a deposit of $30, $50, $70, $100, no matter what you want to.
but minimum amount is $3, and that we have set because मतलब एक reasonable amount है. We don't want to set a very high amount, and we want you to begin your crypto journey on a positive note on zbit.com. And this is only for first time depositors. If you've made a deposit earlier, you will not be getting these 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side. So, how to pay? One second. ये देखो नीचे ही स्क्रीन के ना एक डिपॉजिट ऑप्शन है. You tap on this. Tap when you've tapped on it, it'll show. I don't. It'll show two options, right? You have to tap on fiat deposit. Once you tap on fiat deposits, it'll show you your deposit to futures account. Right now, if you want to make a $30, sorry, 30 USD deposit. Right. So add 300 INR for example for a $3 deposit. Example दिखा रहा हूँ, आप कितना भी कर सकते हैं deposit. ठीक है. Then you select your payment method. Payment method select करा. There are numerous Paytm, payment methods. There is Paytm, there is UPI, all of these things, right? Go ahead and make a deposit, and once you've done that, just let me know. I'll also make sure that you get your 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free of cost. But the only thing is that you have to, tap on the below deposit option. Only then I'll be able to help you. Yeah, go ahead and make a deposit. Feel free to do so. Meanwhile, I've been trading as well. आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन ओपन हो गई है. दोनों नहीं, एक ही हुई है. BTC वाला मैंने कितने पे एंटर करा है यार. 69,600 पे करा है. ओ हो. मार्केट गिरा ही है वहां से जहां से मैंने एंटर करा है. तो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ. Once you've deposited, just let me know your UID as well, right? Because only then I'll be able to, I'll get in touch with my support team and help you out. Yeah, I think it's better to just close this trade and make another trade. एंटर करते हैं यार कोई. देखते हैं क्या होगा. So, और 20. मैं जिस भी अमाउंट पे एंटर कर रहा हूँ ना उसके बाद वो मार्केट नीचे ही चला जाता है. वो उस अमाउंट तक आता ही नहीं है. मैंने 69,950 पे एंटर करा, वो गया ही नहीं उस अमाउंट तक. वहां से ही मार्केट नीचे जाने लग गया. फिर मैंने 69 समथिंग एक और पे करा. 6950 है ना, 69,850 पे करा शायद. वहां से फिर नीचे आ गया मार्केट. अब मैंने वो ओपन ही नहीं हो रहा. अब मैंने एंटर करा है 68,900 पे. अभी देखो 68,868 पे. भाई आजा 900 पे. मेरा ओपन तो कर दे. नीचे जाए ऊपर जाए बात अलग है फिर तो. इथीरियम पे देख लो $50 का प्रॉफिट सीधा सीधा. नॉट मच, जस्ट 500 INR to see. That's okay. That doesn't matter. Just let if you yeah. So you've deposited. Just let me know your user ID. Okay, I have it.
Yeah, so there is this balance thing on the option for balance on the right bottom. Can you see your balance over there? Yeah, you can absolutely go ahead and invest. You can do, if you want to do spot trading, you can do spot trading. If you want to go ahead and make right bottom as deposit option. No, you'll have to close this window first, and then you will have to go tap on the, close this window, go to the balance option on the right bottom. There you will see the balance. Just let me know once you've checked all this, and I'll help you out. Where will I see? Uh, I told you, you have to tap on once you close this live window. Once you close this live window, you will see, four options, five options at the bottom of your screen: home, markets, futures, spot, and balance. Right at the very bottom, when you close this window, tap on balance, check if your balance has been received or not. Right. Yeah, I have also conveyed to my support team. They will be adding your 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu into your account. uh, you know you don't worry, you will get that. So don't worry, I have conveyed that to my team. I think within 24 or 48 hours that will be done, so don't worry about that. Just let me know if you can see the balance in your uh, wallet. ओहो, फाइनली पोजीशन ओपन हो गई है। लॉस में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुली तो एंट्री प्राइस 68,900 था। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, जबकि पहले 69 पे मैं एंट्री ले रहा था। पर ठीक है, इट्स ओके। I have for user 803896. I'm just letting you know that I have conveyed my message to my support team. I've shared your UID as well as your deposit amount, which I feel is 500 INR, right?
So I hope you will be getting your reward in the next 24 to 48 hours. You'll definitely get, or if not by this weekend, you'll get it, and it'll be visible in your wallet by Monday, right? A few people in our team are not available right now, so if it doesn't reflect right now, it'll reflect on Monday for sure. अब प्रॉफिट देखें. भाई इथीरियम पे सीधा सीधा $50, $55 का प्रॉफिट आ गया है. मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है वापस. और मैंने 68,900 पे एंट्री ली थी. ज़्यादा कुछ प्रॉफिट तो नहीं है इसमें, लेकिन इथीरियम में है. इथीरियम 2038 तक ऑलमोस्ट आ गया है, और मैंने 2061 पे एंट्री ली है. तो भाई मार्केट में अभी थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा है, स्टेबल सा ही माहौल है.
बिटकॉइन हेलो गॉड फेवर 5 स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में ऑल द वे फ्रॉम नाइजीरिया आई वेलकम यू टू द लाइव स्ट्रीम ब्रदर हाउ आर यू डूइंग हाउ आर यू यू नो व्हाट इज योर position in the market where do you think BTC will fall till what price will it eventually stop from where will the bull run stop what do you think what is your say on the market right now I welcome you. You're from Nigeria. It's very nice to have you here on the live stream. I was looking at my trades for today, so I thought I'd ask you this question. Also, welcome to user 942793 from India. बहुत बहुत स्वागत है आपका. I welcome you to the live stream. Uh, what is your say on the market? What are you expecting? BTC कितना गिरेगा? क्या लग रहा है आपको? God favor 5. What do you feel? How till what price will BTC fall? There are all kinds of predictions going on, but it's very difficult to you know say at this point in time where this crash will actually stop. I'd love to know your views as well. I have made a $50 profit on Ethereum. You can see from my stats. This is Ethereum $50 profit so far. I entered my entry price was 2061 and right now it is at 203940 whatever. So there is a $50 profit that I am having right now and let's hope that is the case with BTC as well. I've entered BTC at 68,900. It is currently at 68,970 something. So let's hope that it falls further. God favor 5. Do you have anything to say? Are you a new depositor? Have you made a deposit so far on zbit.com? If you've not, I have a deposit offer as well. If you're a new first time depositor, just let me know. I will explain you the giveaway offer, the bonus offer from my side.
There's a $58 profit on Ethereum straight. I'll look to make more trades as well now. I'll look at Solana or 4 hour period में ISS 87.14 गया, lowest 84.79 गया. I think that Solana will also drop a little. Again, 30 is the leverage I am taking. 36.03, 30%. I'm going. On that note, I'll be taking a short break. I've just made a few trades. I'll be keeping a close eye on them and hoping that they will give me the rewards that I'm so looking for today. You should also be going ahead and making a few trades in the market. User 530605, welcome to the live stream all the way from Indonesia. Hello, how are you doing? Welcome to the live stream. I hope you're looking at the prices of different commodities, different coins, BTC, and all these coins. I'll be back in the next few minutes. Till then, stay tuned and keep depositing on cbit.com.
Welcome back to the live stream, guys. I hope that you are keeping a close eye on the price of BTC as well as that of Ethereum as well. I made a few trades myself and I'm looking at all these trades. I'm constantly monitoring them while, you know, uh, actually, going bearish as well in the market. My current BTC is the PNL shows that it is in the negative, but the profit that I've gained on Ethereum is more than $50. I think I will look to withdraw this amount because I feel like the market could go in the opposite direction and then I'll not be able to make this $50 profit. So मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं विड्रॉ करूँ, ट्रेड क्लोज करूँ सबसे पहली बात. I can see my profit slightly dwindling a bit because of not taking out this amount of my PNL. So I'd look to close this trade out in the next few minutes. I'll keep a close eye on it. Meanwhile, we'll also look at the latest crypto news in the market and what it is showing. By the way, XRP price has rocketed to, by 18%. It was looking that it'll go in the direction of $1, but now it is somewhere around the 1.4 mark as well. कल 1.3 से भी नीचे था. अब XRP is back to 1.4. It is maintaining that position and it looks like it has stabilized as well at this point now. We look at the reasons. After a deep sell-off day earlier made it the worst performer among major tokens, the move came as Bitcoin briefly low 70,000. That imbalance matters. It suggests the market wasn't reacting to fresh bad news as much as it was mechanically clearing out bullish bets as prices slid.
Once those positions were forced shut, selling pressure eased and XRP was able to rebound quickly. सोलाना भी $13 के प्रॉफिट पे दिखा रहा है मुझे. खाली बीटीसी में इतनी ज़्यादा मूव नहीं दिख रही है आज की, अगर मैं बात करूँ तो बाकी सब में थोड़ी बहुत हल्का फुल्का दिख ही रहा है. 74 profit on Ethereum right now, ladies and gentlemen. User 997,680, I welcome you to the live stream. I hope that you are investing on zbit.com and investing on the platform, investing on
making the right deposits into your Zbit account and then making most and more and more money. Also, I hope that you're keeping a track of the price of BTC as well. It has dipped in the last few days, and it has come down to levels wherein people are predicting even a $38,000 price, right? For BTC, people are expecting that it will dip to a $38,000 price. So, also, I hope user 997680, you are not a first time depositor, because if you've not made most of that offer, please go ahead and make a deposit. The deposit option is right below my screen, right below the window of this live stream chat. Go ahead, make a deposit, and then you can start future trading or spot trading on zbit.com. मार्केट अभी बेरिश रन से चल गुजर रही है, आप इस दौरान पैसे बना सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर हो, मेरे पास आपके लिए ऑफ़र है, उसको यूज़ करो। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और मिस आउट कर देते हैं इस ऑफ़र को। गिव अवे ऑफ़र है, कुछ नहीं करना है, आपने खाली $3 या उससे ज़्यादा डिपॉज़िट करना है और आपको मेरी तरफ से 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे कॉइन बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपने कुछ नहीं करना, डिपॉज़िट तो आप वैसे भी करोगे। अभी इस ऑफ़र को यूज़ कर लो अगर आप नए टाइम डिपॉज़िटर हो। ये ऑफ़र उन्हीं के लिए है जो फर्स्ट टाइम डिपॉज़िटर्स हैं। ऑल्सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट BTC, and when will BTC actually go to that point wherein we can expect a bullish run in the market. uh, that is very far off now, because a lot of investors and traders are actually saying that it has not even hit its bottom right now. So very difficult to predict that, but uh, we are going to now look at the latest news as well, that is pointing towards how even geopolitical factors might affect the cryptocurrency market, or the war against the war between I welcome you UID 1032610326483 to the live stream. I am keeping a track of all of you who are joining in on YouTube live streaming as well. If you have any comments, any questions regarding the price of BTC and where it is headed towards, you can go ahead and ask me. I'm also keeping track of my numbers, my portfolio, as well as my trades for today as well. इथीरियम ऐसा लग रहा है इज गोइंग टू कम डाउन इवन मोर, बिकॉज अभी हमने लास्ट के कुछ दिनों में देखा है 2000 के नीचे भी ये जा चुका है। अब ये 2000 के ऊपर है, पर कल ये 2000 के नीचे भी चला गया था और 2 दिन वहीं रहा 1900 के आसपास। अब कल वापस से बढ़ा है, पर स्टिल वेरी फार, might dip even further, it looks like.
2061 मेरा एंट्री प्राइस था, 2034 हो गया, 30x का मेरा लीवरेज था, तो आप समझ सकते हैं कि नाउ आई एम एट अ 62 प्रॉफिट। वो मैं दिखाता रहूँगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट। वेलकम टू यूजर 607263 टू द लाइव स्ट्रीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप जीबिट.com पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जीबिट.com पे ट्रेड कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो गो अहेड एंड मेक अ ट्रेड, go ahead and make a prediction related to the future। जब से मैंने प्रिडिक्शन करा है मार्केट उसके आसपास ही भटक रही है। मेरा पीएनएल थोड़ा ज़्यादा नहीं है। करंट मार्केट प्राइस बीटीसी का 69041 है, और ये भी मेरा उसके आसपास ही चल रहा है।
तो भाई ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा था मैं, जिसमें पता चल रहा है कि एथर ने एक कंपनी का क्रैश हुआ है बहुत ज़्यादा एथर की वजह से। 686 मिलियन का नुकसान हुआ है इनको। नेवर माइंड। हमने लगातार नज़र बनाई हुई है मार्केट पे, हम देख रहे हैं कि कैसे ये बीटीसी का प्राइस जो है अभी तुरंत 69,000 पे आ गया है। और मेरे को लग रहा है ये ट्रेड क्लोज करके आई कैन मेक फर्दर ट्रेड्स। XAU का भी देखेंगे ज़रा, 4968 पे आ गया है। लास्ट 60 मिनट्स में इसका लोएस्ट गया है 4968 गया 80 197। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा बस उनसे यही कहना है कि डिपॉजिट ऑफर को ज्वाइन करे, यूज करे बिना मत जाओ। क्योंकि जो डिपॉजिट ऑफर है ना, वो आपको हेल्प ही करेगा। आपने वैसे भी डिपॉजिट करना ही है, आप अभी कर लीजिए, आपको डिपॉजिट ऑफर का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कहना चाहता हूँ मैं बस। और इसको मिस आउट मत करिए। इट इज फॉर योर ओन गुड इटसेल्फ, राइट। आइए कुछ क्रिप्टो न्यूज़ देख लें तब तक क्या चल रहा है मार्केट में। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में क्या चल रहा है, सबसे पहले इस पे नज़र डालते हैं, क्योंकि ये मार्केट को अफेक्ट कर सकता है, हमारे क्रिप्टो मार्केट को। और जब करेगा तो एक मैसिव आपको ना डिप देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें अभी एक डिस्कशन हुआ है, वो ओमान, ईरान और यूएस के बीच में हुआ है। और क्या हुआ है वो ज़रा देखेंगे। और अच्छा उसके आउटकम बताया जा रहा है कि टॉक्स अच्छे हुए हैं। And if that is the case, then it definitely means that the market will stabilize a bit. But जहाँ भी देखो भाई, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है मार्केट को। और जियो पॉलिटिकल न्यूज़ तो काफ़ी करती है। तो ईरान, यूएस और ओमान में जब ये इनडायरेक्ट टॉक्स हुए हैं, वो अभी के लिए तो रुक गए हैं, बट देव बिगन विद अ वेरी गुड स्टार्ट अकॉर्डिंग टू इरानियन ऑफिशियल्स, राइट। हालांकि जो वॉशिंगटन है यानी यूएस है, यूएस ने उसी ही दिन सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर। लेकिन ये आउटकम आया है कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है ये।
जिनका नाम सैयद अब्बास अरागची है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा है कि द टॉक्स हैव बीन वेरी गुड, सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट things are heading in the right direction, and it will ultimately, if things settle down, calm down, we might not have to see another accelerating or escalating tensions or war, right? We've already seen enough of that in the last couple of months, in the last few years. The Russia Ukraine war is still on. So डोनाल्ड ट्रंप का इस बारे में यही कहना है कि द टॉक्स हैव बीन वेरी गुड एंड विल कंटिन्यू अर्ली नेक्स्ट वीक. We have to see what that deal is, but I think Iran looks like they want to make a deal very badly. We're going to meet again early next week. Meanwhile, I want that if Iran fails to reach a deal over its nuclear program, the consequences are very steep. तो भाई यूएस जो है वो अपनी बात मनवा के तो छोड़ेगा ही, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इवेंचुअली चांस है कि चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो यूएस ने प्रेशर डाला हुआ है, थ्रेड बनाया हुआ है लगातार। देखना होगा कि कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मीनवाइल ट्रेड्स भी देखते रहेंगे भाई, अपना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
ज़्यादा प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज तो नहीं हुए हैं आज, क्योंकि मार्केट हैज़ स्टेबल्ड अराउंड द you know it's not fluctuating that much today. थोड़ा बहुत चल रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना प्रॉफिट हुआ है $50 का वो निकालूं पहले, और आगे फिर करूँ। लीवरेज ज़्यादा होता तो ऑब्वियसली मेरे को प्रॉफिट और लॉस भी ज़्यादा होता। $9 के लॉस पे हूँ मैं भी। आई एंटर्ड बी टी सी आज 68,900, इट इज़ करेंटली अराउंड 69,000। ठीक है। Welcome to user 699267. I welcome you to the live stream. I hope that you have deposited some amount of money today into your Zbit account, because if you haven't, go ahead and make so. And if you are a new depositor, I also have a deposit offer for you. What is that deposit offer? I'll just let you know in a while, but it is one that will help you to um, begin your journey on this platform. I'll take a break meanwhile. I'll be back in just a few minutes. Stay tuned, and I will be right back.
Good evening, welcome back to the live stream. Today we are looking at when the price of Bitcoin will eventually start going on a bull run, right? That is the topic for the day because we have seen a roller coaster of a week pass us by, and we've seen how BTC has slipped to even 60,000 in the last few days or so. Now it has regained some of its lost value and it has come to 69,000, right? I welcome all of you users who have just joined in on the live stream. I was on a short break. I took that break and now I'm back to the topic. We're still looking at the trades that I have done as well in the last few minutes, right? I've looked at, I've made a few trades on BTC as well. My entry price was at 68,900. Currently it is 69,000. I'm going, I went short. I'm hoping for the market to fall a little today. So just waiting for that to happen. And I've also made a few trades. Now if you've not made a deposit so far on zbit.com, go ahead and do so. The deposit option is right below me on this live window, right below me. So go ahead and make a deposit, and then you can begin your cryptocurrency journey on zbit.com on a positive note. If you're a new depositor, especially, I have a deposit offer with me. You can get from my site 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost on your first deposit. So if you've made a deposit, this is not for you. This is only for people who've not made a deposit. Now, having said that, we are also going to look at a few news in the cryptocurrency market that might as well affect the market and where it is currently at. A few geopolitical reasons as well. We've looked at the Iran US war as as an example of if things escalate there, if the conflict goes on for longer, and what effect will it have on the cryptocurrency market, right? Apart from that, we've looked at the talks between the two countries and Oman as well, uh, being involved, and the first talks have been good, uh, from an Iranian point of view at least. So it doesn't look like at the moment. Obviously, it's just the start. The talks, they say, are good talks so far, but it is just the start, and we'll have to wait and see how that pans out, that entire conflict, because it will have some kind of effect on the cryptocurrency market. Now we are also looking at how Ethereum prices have fallen in the last few weeks or so. We've looked at Ethereum. It went down to below 2,000. It was trading at somewhere around 1900s. It has revived a bit and it is now back to 2047. Still way far from where it was in the last 1 month or so, because the highest was 2549, right? If you see the last month, but right now it is what it is, and this is all we have. So I welcome user 248425 as well to the live stream. If you've just joined and you are a new depositor, I was just letting all of you viewers know that you can get from my site 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free. Of course, you don't have to do anything. You just have to deposit three or more dollars on the Zbit account of yours. Also, the deposit option is right at the bottom of the screen. You can go and deposit, and भाई डिपॉजिट करो भाई, क्या मतलब आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आप ज़रूर डिपॉजिट करिए मेरे हिसाब से। और काफ़ी सारे लोग डिपॉजिट ऑफर नहीं लेते हैं, आप ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट मिस आउट ऑन दिस, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। एंड या
यूजर 269456, क्या हाल है आपके? क्या लग रहा है आपको मार्केट का? बीटीसी कितने तक जाएगा अभी? आपको क्या लग रहा है? आई वुड लव टू नो योर फीडबैक एज वेल, योर कमेंट्स। व्हाट डू यू थिंक? क्या लग रहा है मार्केट कितना नीचे तक जाएगा? बीटीसी 68,000 के आसपास है, कहाँ तक जाएगा? यूजर 269456, क्या लगता है भाई? आप कमेंट कर सकते हो नीचे। एक बॉक्स है जहां आप लिखा है, से समथिंग। आपको क्या लगता है? हाँ, कमेंट करिए सर। से समथिंग पे गो अहेड, मेक अ गेस। क्या लगता है आपको बीटीसी कहाँ जाके रुकेगा? काफी कुछ हो रहा है आजकल। multiple factors are affecting the price of BTC right now, not just one factor. The charts indicate a trend wherein you can see that they are telling us that the market is crashing and coming down. Apart from that, it also looks like geopolitical reasons. Then the appointment of Kevin Walsh as well, जो अभी यूएस में फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन नॉमिनेट हुए हैं बाय डोनाल्ड ट्रम्प। उनका आना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कंसिडर करा जा रहा है। आफ्टर जब से वो आए हैं, उन्होंने जेरोम पावेल को रिप्लेस करा है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि उनके जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत हॉकिश हैं। तो ये भी एक रीज़न है, जब से वो आए हैं कोइंसिडेंटली तभी से ही मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो गई है। अक्सर जब मार्केट ऐसे क्रैश होती है तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी व्यूज़ जो हैं लोगों के, वो बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाते हैं। और ट्रेंड तो दिख ही रहा है बेरिश मार्केट में, बट लोगों का ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाता है। लगता है फियर का एक माहौल रहता है। कल मैंने देखा था कि फियर ये जो इस दौरान है, इट इज़ ऑलमोस्ट कम टू द लेवल जो एफटीएक्स क्रैश 2022 में हुआ था उसके लेवल का है। यूजर 269456, बहुत चुप चुप बैठे हो, बोलो कुछ। आई वुड लव टू हियर योर व्यूज। आई वुड लव टू हियर द comments that people have to make on BTC right now, and what is their perception, what is their perspective.
I welcome user 223643 as well to the live stream. We are constantly keeping track of BTC and ETH at this point in time, and we've made a few trades as well in the market. My current profit is that of $54. I think I will look to close out this trade, but what I have understood is आज जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ज़्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा इतना ऐसा दिख नहीं रहा है। कांस्टेंट 68 69 ऐसा मार्केट चल रहा है और काफ़ी देर से ये फ्लक्चुएशंस हैं। अभी एक मैसिव कोई फॉल या कुछ प्लंज या सर्ज नहीं आया है। द मार्केट इज स्टेबलाइजिंग अ बिट एट दिस पॉइंट इन टाइम। This is also a big news in the context of cryptocurrency. Russia's largest bank, Sberbank, prepares to issue crypto-backed loans. ये भी एक important news है। अगर आप क्रिप्टो अडॉप्शन की बात करें, धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में ऐसा फैलती जा रही है और रशिया के बिगेस्ट बैंक ने कहा है कि इट प्लान्स टू ऑफर लोन सिक्योर्ड बाय क्रिप्टो करेंसी फॉलोइंग पायलट डील विद अ माइनिंग फर्म। लेजिस्लेशन इसकी 2026 में आने की उम्मीद है। In the evolving landscape of digital finance, Big Four consultancy firm EY has zeroed in
on what it believes is the next defining frontier: wallets. Wallets are fast becoming the critical interface for the next era of financial services, not just tools for holding cryptocurrency, according to Mark Nichols. The wallet is the strategy. Nichols, who co-leads the firm's digital assets consulting business, told Coindesk in an interview, "Who owns the wallet, who provisions the wallet, will win the client relationship." That is what EY believes in. That is the firm idea and philosophy behind EY's leadership. थोड़ी सी मार्केट हल्की सी और गिरी है। बीटीसी में मैं बेरिश रहा हूँ आज भी, तो इसलिए मॉनिटर कर रहा हूँ प्रॉफिट्स। शायद मैंने लेवरेज थोड़ा और ज़्यादा लगाया होता तो और ज़्यादा प्रॉफिट में होता। Just looking at these profits. I'll take a break and I will be back in the next few minutes. Stay tuned only on zbit.com live streaming or on YouTube. Stay tuned.
Welcome back to the live stream. We are looking at the price of BTC that has gone slightly down in the last few minutes, and keeping a close eye on that because I have made a trade. I will look to monitor my trade. $100 profit on Ethereum. You can see $100 profit on Ethereum. I look to close this trade out. I look to close this trade out. I've closed this trade, closed all trades for that matter, and now I've made a $134 profit, as you can clearly see. थोड़े से और ट्रेड करेंगे आज, क्योंकि मुझे अभी भी बेरिश जाती ही दिख रही है मार्केट। और
Welcome to user 8776885. I welcome you to the live stream. If you've just joined, we're looking at the price of BTC and ETH. And if you've not made a withdrawal so far on zbit.com, kindly go ahead and make sure the deposit option on the live below is just below the live stream window where you can see me. And I have a deposit offer as well right now, which a lot of people often miss out on. I welcome user 7393003 as well. There is this deposit offer that you should definitely use if you are a first time depositor. मेरी तरफ से आपको मिल रहा है 20,000 पेपे या 20,000 शिवा इनू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कुछ नहीं करना, आपको बस डिपॉजिट करना है $3 या उससे ज्यादा। So go ahead and make that deposit, because it is only going to help you at the end of the day. I've made $134 today in the last few minutes. I'll make more in the next few minutes as well, because I will keep trading. The market is showing a somewhat upwards trend, but I feel it will come down eventually. And so I feel like I can enter this market at 68, 770 maybe, or 760. 770, it did touch 770. 725, I think 780, 790, 800. It's rising a bit. That's okay. एक ट्रेड करा है।
68 9 नहीं 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 68 800 पे एंटर किया है, एंट्री लिए। 69 हो गया है। ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा ट्रेड नहीं करा है। बट मार्केट दोबारा फिर से मैं देख पा रहा हूँ कि इट हैज कम डाउन टू सिक्स, इट हैज कम डाउन नियर 68। इट्स ऑब्वियसली वेरी नियर फ्लक्चुएटिंग, बट इट इज नियर दैट पॉइंट वेर इन आई हैव एंटर्ड। तो भाई ठीक है, अभी आई थिंक आई close this trade out because that will be better. I don't think it's a good trade that I have made. 68 900 पे होता तो भी एक बार को ठीक था, 68 800 पे कर रहा है तो एंट्री थोड़ा मुझे लग नहीं रहा है सही है। ऑल दो मार्केट गिर ही रहा है यहाँ से। वेट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं, लेट्स सी। पेशेंस इज द नेम ऑफ गेम, नेम ऑफ द गेम इन क्रिप्टो। 134 डॉलर का प्रॉफिट आज हम बना चुके हैं, तो इतना लालच दिखाना सही नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, फिर उसके बाद इस ट्रेड को क्लोज आउट भी कर सकते हैं। 86 800 पे मैंने एंटर करा है, 86 840 पे है। गिर रहा है वैसे तो, ऐसे कोई अच्छा ही इंडिकेशन है मेरे लिए, बट फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है ट्रेड सही नहीं करा है मैंने, बट इट्स ओके। यूजर 298970, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। आई होप यू जस्ट जॉइन एंड यू मेड अ डिपॉजिट टुडे। नहीं किया डिपॉजिट तो नीचे मेरे डिपॉजिट ऑप्शन है, गो अहेड मेक अ डिपॉजिट, बिगिन योर क्रिप्टो जर्नी फॉर टुडे एट लीस्ट। मार्केट को रेगुलरली आज हमने कंटिन्यूसली मॉनिटर करा है, और जिन जिन लोगों ने भी आज ट्रेड नहीं करा है, आई कैन शो देम I made a $134 profit today right before your eyes in the last few minutes ट्रेड्स करके।
एंड आई वाज बेरिश, अपने कमाए $134, बाहर निकले, ट्रेड से क्लोज किया। अभी भी थोड़ा और ट्रेड कर रहा हूँ, $7 के नेगेटिव में हूँ, वेट करूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट में आएगा निकाल लेंगे। $60 का नुकसान अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, विल वेट एंड देन वील मेक अ फर्दर डिपॉजिट, इट्स ओके। I don't mind that. Also, if you've been on this live, the topic for today has been when will the bull run phase of BTC finally arrive. So we are waiting for that, and we will also wait for I told you that that phase is going to take some time because of whatever has happened in the last few days or so. uh, ये जो है एक स्लो ग्राइंड और एक फास्ट क्लाइम और फिर एक पैराबोलिक मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। न्यूज उस दौरान फिर भी बेरिश ही होगी, मैक्रो तभी भी खराब ही लग रहा होगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स कह रहे होंगे कि साइडलाइंस अंटिल ब्रेकआउट और चार्ट्स वोंट लुक बुलिश अगेन येट। बट एक स्लो ग्राइंड आएगा, फिर एक फास्ट क्लाइंब आएगा और फिर एकदम से एक पैराबोलिक मूव आएगी और आपको लगेगा कि बूम, बीटीसी ने अब वो पा लिया है जो है ना, जो कब से लोग इंतजार कर रहे हैं। सो दैट फेज विल इवेंचुअली कम, बट वील हैव टू ग्राइंड एंड वेट एंड स्ट्रगल ड्यूरिंग दिस पीरियड, सर्वाइव दिस, एंड देन यू विल ऑब्वियसली हैव द बुल रन एज अ रिवॉर्ड, राइट। तो अभी मार्केट थोड़ा फिर से बड़ा है, आई विल वेट फॉर इट टू फॉल फर्दर और मे बी आई विल जस्ट क्लोज दिस ट्रेड आउट। एक सर्ज दिख रहा है मार्केट में दोबारा। Welcome to user 298970 again.
व्हाट डू यू फील, कितने तक बीटीसी जाने के चांसेस हैं? डू कमेंट, आई it'll make me feel that someone is listening and contributing in this discussion wherein we are looking at the price of BTC uh, falling, and you know, right, 690454 है। अब वापस मुझे ऐसा लग रहा है डिक्लाइन आता सा दिख रहा है। अब शायद मैं थोड़ा पॉजिटिव में आऊंगा, बट लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। द रेड कैंडल्स आर नाउ डोमिनेटिंग। अब देखते हैं अपने ट्रेड को। थोड़ा सा नेगेटिव में तो है, बट वील वेट फॉर इट टू कम बैक टू पॉजिटिव। ऑल्सो लुक एट वेरियस न्यूज फॉर द टाइम बीइंग क्रिप्टो को लेके।
ये भाई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. A new crypto winter is here and even the biggest bullets are uncertain why. ये नहीं देख पाएंगे हम क्योंकि हमने सब्सक्राइब नहीं करा है वॉल स्ट्रीट जर्नल को. दैट्स ओके. ये देखो भाई, साउथ कोरियन क्रिप्टो फर्म एक्सीडेंटली सेंड्स 44 बिलियन इन बीटीसी टू यूजर्स. बेचारे. It had recovered 99.7% of the 620,000 bitcoins worth of 44 billion at current. They had restricted trading and withdrawals to the 695 within 35 minutes of the erroneous distribution on Friday. Hmm. XAU पे कुछ ट्रेड करें. ये देखो भाई, मार्केट में फिर से एक शार्प फॉल आया आ रहा है. We'll wait.
$43 नेगेटिव में हूँ। ठीक है। भाई AI.com जो है Crypto.com के ओनर ने खरीद लिए, फाउंडर ने ले लिए। $70 मिलियन, बिगेस्ट एवर वेबसाइट नेम डील। AI.com, एक बार देखेंगे AI.com है क्या। एक दिन में ये आ जाएगी, बिक गई है ये। दैट इज द न्यूज़, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। Crypto.com और AI.com का ओनर दोनों सेम ही है। क्रिस मार्सजेलिक। सुपर बोल एड में इसको वो लोग डेब्यू कराने का सोच रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग न्यूज़। जिस बंदे ने Crypto.com खरीदी है उसी बंदे ने AI.com अभी खरीदी है, और $70 मिलियन की खरीदी है ये। दिस इज द बिगेस्ट सच सेल एवर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो, दो बहुत ही पॉपुलर चीज़ें इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, क्रिप्टो एंड एआई। Crypto.com का जो फाउंडर था उसने AI.com खरीद ली है, और इट इज़ द बिगेस्ट सेल एवर। ये अगर आप पढ़ पाओ तो, बिगेस्ट एवर वेबसाइट नेम डील। और इसके साथ अगर आप देखो तो ये Crypto.com भी एक बार हम खोल सकते हैं। बंदे का नाम है मार्सजेलेक, क्रिस मार्सजेलेक। नाउ दिस इज अ crypto crazy crypto fact of the day as well. It doesn't look like it's working at the moment, but ठीक है। अरे let's close this. $69 $590.
ओपन हो गया है ट्रेड, और अब नीचे जा रही है मार्केट, बट मैं बुलिश रहा हूँ तो देखते हैं। Let's wait for the market to go above 569 $500. Welcome to user 748106 all the way from Nigeria. If you've not made a deposit so far, below me is the download button. Tap on it and make a deposit now, because if you are a new depositor, you can get from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. You don't have to do anything extra, just need to deposit three or more dollars into your own Zbit account. So if you've not made a deposit, go ahead, tap on the deposit right below my screen. Kamala. Today's live session has been about, whether BTC can start its bull run. When will that start? Uh, the answer to that is around uh, mid 2026 or late towards 2026. We'll start to see a bullish period in cryptocurrency. In BTC, we will have to wait and see and survive during this period, so that we can eventually, get the rewards of surviving this such a bearish market that is currently in, right in front of us. Now, with that, I feel like I am now going to enter the profit. The market is looking like it'll, the green candles are climbing up and down again. I've set a very high leverage of 40x. I am coming towards the closing stages of my live stream now, and with that, I will just let you know that if you've not deposited, go ahead, deposit now. Tap on the deposit option right now, and make most of the deposit offer that I have with me.
Welcome to user 8000907 and user 846225 on the live stream. Today we are looking at the price of BTC as well as that of Ethereum, how the market is doing, how we also looked at this latest news when it comes to crypto and AI. The person who had bought crypto.com has bought AI.com as well, worth $70 million. This website deal was cracked, and this is another news that is doing the rounds. The topic today was, of course, the price of BTC and when it will go on a bull run. That is what we were looking to bisect and dissect uh, today, and it feels like the bull run period is expected to come in somewhere between mid 2026 and late 2026. By the current standards, we are into a bearish trend market. The bullish phase will have to, it'll come, but it'll take its own time, and you might not even realize when it is actually started as well. थोड़ा सा तो बढ़ जा भाई, तो बढ़ने का सोचता हूँ तो बढ़ता है, घटने का।
अरे भाई बढ़ जा थोड़ा, 69,500 पे आ जा बस। और इसी के साथ साथ मेरे यहाँ से विदा लेने का वक्त आ गया है। आई एम ऑलमोस्ट एट द वेरी end of my live session. If you have any questions on BTC, कैनी सर आप तो लॉस बुक कर रहे हो हर ट्रेड में? नहीं सर, लॉस नहीं कर रहे हैं। लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हमने लेवरेज ज़्यादा लगाया हुआ है। वी विल वेट। लॉस नहीं हो रहा, और हम वैसे भी एक $140 कमा बैठे हैं आज के लाइव स्ट्रीम पे ही। हम $1000 पे थे, उसके बाद हमने थोड़ा एक और ट्रेड लगाया है। हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हैं, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है।
or look at all the gainers and losers in the market today, there's not been more a lot of change. If you ask me, change has been very minimal. 2047 पे हम 48 करके एंटर करते हैं एक बार फटाफट. 2047 20% open now. It is all a waiting game. It is all a game of patience, and if you can wait and survive this period, you can obviously reap the benefits of a bullish market as well. Welcome to user 711382 to the live stream. We are at the closing stages of this live session, and I am currently invested as well on. If you can see my PNL, we are looking at a few trades as well. I am going through a small loss, but that's okay. We've made a $140 profit today as well, so that doesn't matter. We will wait and see how the market unfolds, and then we'll close this trade out. As I come to the close of this live session, if you have any questions, you can go ahead and ask. Also, अगर आप इंडिया से ज्वाइन कर रहे हो, डिपॉजिट नहीं करा है अभी तक एक बार भी, तो मेरे पास आपके लिए डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, उसको यूज करो आप, और आप उसका फायदा उठाइए. ऑफर क्या है बता देता हूँ एक बार. मेरे नीचे अगर आप देखोगे, जहां मेरी स्क्रीन है, विंडो के नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन है. गो अहेड, टैप ऑन इट एंड मेक अ डिपॉजिट ऑन zbit.com. आपको वो करने से क्या मिलेगा वो भी बता देता हूँ. आपको मेरी तरफ से 20,000 शीबा इनू या 20,000 पेपे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. आपने कुछ नहीं करना है उसके लिए. आपको बस $3 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करने हैं. नए डिपॉजिटर हो, पहली बार करने वाले हो, कभी ना कभी तो करोगे ही. तो अभी गिव अवे ऑफर चल रहा है, इसका इस्तेमाल करके इसको ले जाओ. टैप ऑन इट एंड मेक अ डिपॉजिट राइट नाउ, एंड आई एम हियर to make sure that you get your 20,000 pepe or 20,000
Shiba Inu as a bonus in your wallet. User 711382, user 847207, thank you for joining. We are coming towards the closing stages of my live session, and it has been a really interesting session. We've talked about when that bull run will come in case of BTC, because the market is going through such a bearish pattern, bearish mood, and bearish uh, behavior, that it doesn't look like that bullish phase is near us. In fact, it seems like it is very far. So we will have to wait and see. By mid 2026 or by late 2026, there can be a bullish phase in the BTC market. Now it is at 70,000. It first needs to regain its lost value and come back to the levels that it was a few till it to where it was a few days back. तो अभी ये है आज का लाइव सेशन, इस बारे में था. I am coming towards the closing stages of my live session.
All right, then I'll be heading out now. It's been an absolute pleasure having all of you guys. It's now time for me to head out. Uh, and I'll see you again on Wednesday. And till then, it's a very goodbye from my side. Keep depositing only on zbit.com. Goodbye and take care.